today's presentation, our topic is infographics and content marketing. Good afternoon, everyone. Now I am presenting what is infographics. So, a visual representation of information or data. For example, हम कह सकते हैं chart, diagrams. A good infographics is worth thousands of words. There are visual representations of data, can be graph, chart, other diagrams, aim to present information to easily digestible form, to the point and clear what they are represent. हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या present करना है वो easily convey हो सकता है. That's the way through the infographics. As we all know, infographics actually imagery data visualizations like pie, chart, graphs, इन सबका mix होता है. Minimal text के through हम अपने व्यूअर्स को अपने टॉपिक्स और अपना डेटा और अपनी बात को समझाते हैं. एडवांटेज ऑफ इन्फोग्राफिक्स: कंसेंस, नो frills, take less space, great if you want to discover patterns. Being visual, they are easily understandable and impactful, and great for instructions purpose tutorials. जैसा कि हम सब ने यहाँ पे देखा कि इन्फोग्राफिक्स इजीली कन्वे करने, मैसेज कन्वे करने के लिए एक मीडियम है. एनी इमेजरी और डेटा और एनी नंबर. टिप्स टू डिजाइन गुड इन्फोग्राफिक्स. सो फर्स्ट इज outline your goals for your infographics. See, what we want to show our viewers, set the subject first, and we can say topic. And the second is what is gather the information. We have to study all the data properly before we start work on any infographic or any kind of information we give to our viewers. Third is make data visualizations for your information. कैसे हमारा डेटा विजुअलाइज करता है इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, ये हमें स्ट्रेटेजी पहले से ही तैयार करनी होती है कि किस टाइप का डेटा है और वो किस टाइप के इन्फोग्राफिक्स में जाएगा. डिफरेंट डेटा डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स के थ्रू कन्वे होते हैं. ये नहीं है कि इन्फोग्राफिक्स मीन्स एक ही उसमें चला जाएगा. फोर्थ इज क्रिएट द लेआउट यूजिंग द टेम्पलेट्स. ऑब्वियसली हम इन्फोग्राफिक्स के थ्रू कुछ भी दिखाना चाहेंगे तो हमें एक लेआउट चाहिए होगा कि किस टाइप के टेम्पलेट्स को हम यूज करेंगे, और वो obviously easily understandable होना चाहिए. Fifth is obviously final style to element your infographics. Okay, here's the type of infographics. Infographics बहुत सारे types के होते हैं, तो हम उसमें समझेंगे कि different type के topics किस तरह के infographics के through जाते हैं. First is flowchart. Flowchart is a picture of separate steps of process in sequential order. Okay, great for representing workflow, suited for instructions and tutorials. साइड में हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो एक हॉस्पिटल के वर्क स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे कोई भी हॉस्पिटल या इस तरह के एग्जांपल्स अलग अलग हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे ये एग्जांपल यूज किया है कि कैसे वर्क स्टार्ट होता है, कितने पेशेंट्स अराइव हुए, रजिस्टर्ड पेशेंट कितने हैं, नर्सेज और डॉक्टर्स, एंड हु नीड टू मेक मेडिकेशन एंड हु नीड टू फॉलो अप्स. इस तरह से एक चार्ट है जो पूरा वर्क प्रोसेस शो कर रहा है. विद द फ्लो चार्ट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द हाउ टू वर्क अ हॉस्पिटल और एनी ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड वन इज टाइमलाइन. टाइमलाइन इन्फोग्राफिक्स आर very popular to represent the format of, especially in presentations which can include any amount of informations, right, provided it's developed with a good quality. So we can say like tree, it's representing the chronological progressive for someone's or something, suited for event mapping, planning, forecasting, and representing the evolutionary milestones. Institute or organization कहाँ से start हुआ, कहाँ खत्म हुआ, what is the topic को भी इस तरह से describe किया जा सकता है. So it is easily understandable with the time period. Next is comparison. Comparison, we can see convey the informations, highlighting the differences between and similarities also, anything. So representing the contrast between two similar elements, as we saw the picture, side by side layout, bad and good, साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में.
तो कंपैरिजन के थ्रू हम खुद का मार्क भी कर सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी देख सकते हैं, प्लस गुड और बैड का स्पेशली देख सकते हैं. साइड बाय साइड लेआउट एंड यूजफुल व्हेन यू वांट टू पुश फॉर द चॉइस बिटवीन अवेलेबल ऑप्शंस. ओके, अगर हम कहीं भी जाते हैं, 2 ऑप्शंस अगर हमारे सामने रहते हैं और उनमें कंपैरेटिवली चार्ट होता है, तो हम इजीली समझ जाते हैं ओके दिस वन इज गुड फॉर अस और दिस वन इज नॉट गुड फॉर अस. Data visualization, representing numbers and statistics in diagram forms. Snapshot type representations make complex statistics easy to understand. हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है माइग्रेंट वुमेन्स का. तो इसमें हम पाई चार्ट के थ्रू ये देख रहे हैं कि कितने परसेंट डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, कितने परसेंट माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स हैं. तो ये सिर्फ एग्जांपल है, बट इस तरह के हम काफी सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द डेटा विजुअलाइजेशंस. फोर्थ इज लिस्ट बेस्ड. लिस्ट बेस्ड इंफोग्राफिक सिंपल से सिंपल डेटा को शो करने के लिए हम सबसे पहले लिस्ट बेस्ड इंफोग्राफिक का ही यूज करते हैं. सिंपल डेटा सिंपल वे में कन्वे करने के लिए. रिप्रेजेंटिंग डज और डोंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस मेक फॉर ग्रेट एवरग्रीन कंटेंट. सो लिस्ट बेस्ड इंफोग्राफिक्स के थ्रू हम इस तरह से अपने डेटा को इजीली कन्वे कर सकते हैं. Process based infographic. Process based infographic are specifically type of infographics which is designed to visualize or summarize the simplify the process as the name say. So जैसा कि इसका नाम है, हम किसी भी प्रोसेस को प्रोसेस जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ऐसा प्रोसेस जो सिंपली प्रोसेस्ड हो. Is anatomical infographics and how it works. अगर हमें डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करना हो तो हम इस तरह के इंफोग्राफिक्स यूज करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि हाउ डज एन एयर कंडीशनर सिस्टम वर्क्स. सो हमने इसे एनाटॉमिकल इंफोग्राफिक्स के थ्रू प्रेजेंट किया है क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है. अदरवाइज वो लिस्ट या सिंपल किसी इंफोग्राफिक्स के थ्रू अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रोसेस है जो different ways से start हो रहा है. That's the reason. Representing technical information is an easy manner, and second is inner working of a system. The visual can look like a dissections. Geographical infographics. Geographical infographics, when we are using political map, it's another thing. But geographical infographic, इसमें मैप के थ्रू हम परसेंटेज वाइज, नंबर्स वाइज और प्रोसेस के थ्रू, कोई भी मैप है कलरिंग होता है तो क्लियर इजीली अंडरस्टैंडेबल है. नीचे है ग्रे कलर शो कर रहा है कि फॉरेस्ट्रेशन कितना जगह में है, और रेड कलर शो कर रहा है कि डिफॉरेस्ट्रेशन कहाँ है, विद द नंबर्स, ऑल्सो विद द कंट्रीज. एंड इफ अगर हम इसको उठाकर पढ़ने भी नहीं जाए तब भी ये हमें तुरंत समझ में आ रहा है. तो ज्योग्राफिकल इंफोग्राफिक्स मोस्टली इसलिए यूज होते हैं कि हमें विदाउट एनी इंफॉर्मेशन की इंफोग्राफिक्स किस तरह से रीड आउट किए जाते हैं, या इसका इतना डीप स्टडी भी होता है, तो भी कोई भी समझ सकता है इसको पढ़ के या देख के से. सो फर्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग लोकेशंस बेस्ड डेटा, वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक सोशल कंटेस्ट एंड पॉपुलर फॉर द रिप्रेजेंटिंग ज्योग्राफिकल सर्वे डेटा. यस, कंट्री में होने वाले डिफरेंट सर्वेज को भी ये इजीली शो करता है. ओके, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशनल. फर्स्ट इज टेल्स द स्टोरी फ्रॉम डेटा. ये इस तरह का इंफोग्राफिक होता है कि हम उसे देखकर एज ए स्टोरी इमेजिन कर सकते हैं. उसको रीड आउट करते ही एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो जैसा चलेगा. तो टेल्स द स्टोरी फ्रॉम डेटा, समराइज द रिसर्चेस रिपोर्ट्स एंड सिंथेसाइज द डेटा टू द सपोर्ट ऑन आर्गुमेंट्स एंड और it presents the entertaining or intriguing data. Information data actually help करता है easily and digest way में हम किसी भी तरह के प्लान को या इस तरह से टेबल पे उतार सकते हैं कि वो easily understandable हो. Statistical data. Statistical infographics actually type of infographics that where we tell the story behind the data. So
Staticals are basically research facts and figures can be presented visual through the use of typography, chart, graphs. This helps makes data appear more interesting and digestible than the bunch of number of or table. Hierarchical infographics show how to information and organized in the different levels. So as we can see value chart here the example, तो कि किस तरह से फ्लो आगे बढ़ता है एंड किस तरह से वो लेवल्स कनेक्ट करता है. मीन्स कि ये नहीं है कि एक स्टेप है दूसरे स्टेप से वो कनेक्ट नहीं कर रहा है. ईच स्टेप्स कनेक्टेड विद ईच अदर एंड वो फ्लो एंड कनेक्शन करते हुए एक लेवल्स को क्लियर करते हैं, क्रॉस करते हैं. प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द प्री डिफाइंड लेवल्स एंड डिटेल्स हाउ ईच लेवल्स इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट. हमारा ही एग्जांपल रखा है फ्लो चार्ट का, तो वो हम इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह से हायरार्किकल चार्ट का कि किस तरह से हमारे वैल्यूज एक के बाद एक के बाद एक और एक के बाद एक क्लास में एक गोल को अचीव करते हैं. तो ये एक फ्लो है, फ्लो के साथ साथ प्रोग्रेस एंड एक गोल और एम को कंप्लीट करने वाले हैं. और विद द ईच एंड एवरी स्टेप्स इज अ हायरार्की. बैड इन्फोग्राफिक्स लाइक मैं कह सकते हैं जिसको देखते ही हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है. लाइक दिस टू मच टेक्स्ट, किसी तरह का कोई विजुअल है ही नहीं इसमें. तो इन्फोग्राफिक के बैड एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं कि जिसमें कलर्स, इमेजरी और इंफॉर्मेशन का, डेटा का सही तरह से प्रेजेंटेशन नहीं हो. इनकंसिस्टेंट स्केलिंग. सो इस इन्फोग्राफिक के थ्रू हम देख सकते हैं कि कैसे इसमें इन्फोग्राफिक्स का मैस कर दिया है. लाइक जो स्केल है उसे अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया है, या तो डेटा को जब तक हम स्टडी करके अच्छे से उसको पोर्ट्रेट नहीं करेंगे और स्पेसिफिक इन्फोग्राफिक के थ्रू जिसके अंदर ये एक्चुअल में बैठता है, तो तब तक ये लुक्स में अच्छा नहीं लगेगा, ना ही रीडेबल रहेगा. और एज वी कैन से कि एक बैड इन्फोग्राफिक का एग्जाम्पल सेट करता है. जस्ट टू मच ऑफ एवरीथिंग. यहाँ पे हमने देखा बार चार्ट, पाई चार्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डेटास जिसमें डेटा तो विजुअल ही नहीं होता एंड यूजिंग मैनी कलर्स. लाइक इस तरह के इन्फोग्राफिक्स एक बैड इन्फोग्राफिक का एग्जांपल सेट करते हैं जहाँ पे इतने सारे कलर्स हैं तो जो रीडेबल नहीं है, जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है. तो इस तरह का इन्फोग्राफिक जस्ट देखते ही बैड इन्फोग्राफिक का एग्जाम्पल है. इवन इसे कोई इन्फोग्राफिक के थ्रू कुछ अंडरस्टैंड करना चाहेगा तब भी इसे स्किप करेगा कि नहीं, इससे रहने देते हैं, क्योंकि ये जो टाइपोग्राफी इसमें यूज की गई है वो बहुत ही स्मॉल है और कलर्स बहुत ज्यादा एलिमेंट इसमें यूज कर लिए गए हैं. जबकि इन्फोग्राफिक्स में कलर होते हैं मिनिमल कलर्स या 1 और 2, 3 कलर्स के थ्रू हम एक अपने डेटा या स्टडीज जो भी रहते हैं सर्वे कन्वे करते हैं. एग्जांपल ऑफ बैड इन्फोग्राफिक्स. सो गुड इन्फोग्राफिक्स का लेआउट होता है वो वेल कंसीडर्ड होता है विद कलर्स, विजुअल स्टाइल्स, और हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक यूनिकली एंड ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड होता है जिसे देखकर या लाइक रीड आउट कर हमें खुद को भी अच्छा लगता है एंड जो भी हमें टॉपिक दिया जाता है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है. उसमें एक अपना विजुअल स्टाइल होता है. So moving on to our next topic, why should we use infographics in our content marketing? One of the major things, a major concept why we use infographics is enforce brand identity. Every single brand that we notice nowadays do have some sort of personality. They are particular about their color palettes, their fonts and everything else. And that's the way how they choose to portray their brand. So infographics is one of the major ways how brand portray their brand identity or how they enforce their brand identity. Next one is helps you build thought leadership. We know publishing content online is becoming an increasingly popular method for sharing your opinions and expertise with broad audience. And with infographics, you can make it easier for them to grasp the knowledge that you want to share with them. And it would be far way better than putting up long paragraph or making them go through long reads. Instead, you can just put it in infographics and make it more digestible for them.
Next is better customer and reader engagement. We know how fast and rapidly world is going, and how people switch and walk over the content every now and then and scroll over it. So through infographic, you can present your data more impressively in a better manner to make customers and reader engage better. Repurposing. We can use our blog data and our other research or white paper reports through infographics, making it easily digestible for users. Next one is great for social media or for instances where space is limited. We know that how social media is growing and how interactive it is. So we can use infographics in our social media platforms for better user engagement rate. And one of the advantages of relying on infographics is that it's space restricted. It doesn't need a lot of space to express the content. Next is, where can you use infographics? First one, social media static posts that we do every now and then. We post infographics on social media. Next is Pinterest, made for infographics. Popularity is about it. Third is blogs, making your blog content more digestible to your audience or making it more understandable for them. Blog images do great work. Fourth one is reports. We know how reports are. Whenever we hear reports, it's like we frame that in our head that it's going to be long and monotonous. Using infographic, we can make it summarized and easily digestible, making it interesting. Fifth one is white papers and other industry publication. We know how long these white papers and industry publications can go, and using infographics, we can make this information concise, attractive, and we can display these results through infographics for better engagement. Next is, what should a writer do? Of course, designers play a huge role in creating infographics, but we as a writer, it's our duty to provide proper infographic details for our designers so that they can create specific goal-oriented infographic. So first one, we need to decide on one specific goal topic per infographic. We cannot pile up our single infographic with a lot of information, lot of diverse topic. It will simply mislead and it won't look good. And we have seen how bad infographics look. We might create one of those examples if we put a lot of information in single infographic. Next one is ensuring the text has a tone of voice consistent with brand. Of course, we need to create infographic that stays consistent with brand language or brand style. Keeping text minimal. Of course, we will be representing our text through infographics, so we don't have to barge in with our long titles or long textual information there. That would be taken care by infographics. We need to keep our text minimal there. Next is plan according to the space you want to take up. Of course, we cannot put a header image in mid of some blog. We cannot put informational at the place of statistical infographic. We need to keep check on that. Next is use pointers rather than full sentences. Similar to the previous mentioned point, we need to keep our points concise and to the point. Have a reference in mind where the data is complex. We can do that for ourselves as well. At times, we might have to create infographics where a lot of data is there. So we can keep some examples in our mind for reference purpose to make it easier for all of us to create a good infographic. Not all information can be represented in infographics format. Discard if the data is too complex or variegated. This is one of the basic things. Not every information can be displayed or portrayed through infographic. So we need to keep on check that as well.
try to have one infographic at least for every blog we write. So one of the basic things is making a blog more interactive and more digestible. It is recommended to use at least one infographic per blog. Make sure not too many colors are being used. This is one of the basic things we need to keep in our mind, that while we check on our infographics, we need to make sure that it's not too shiny, not too flashy as per our brand language. Cite sources for data. Authenticity needs to be maintained. If we are using someone else's research data for our blog, we need to cite source it. Next is review carefully to ensure that the representation is easy to understand. Now, as we have read through so many infographics, it would be easier for us to review whether the data representation is fine or not, whether it's going or getting along with the content. We need to ensure that audience can easily digest it. It should not be too difficult for them to understand. That's it. Thank you.